Good morning to all of you, my friends and my students. So, welcome back to your study channel, Unacademy. Let's crack it, let's start our preparation and aim towards the GATE and ES exam 2021. Okay, so since we were already continuing our engineering mathematics, and today this lecture will be dedicated towards continuous distribution. Okay, we have already seen a lot about your probability, about statistics, about discrete distribution. Today we will see continuous distribution, which is almost the end for your probability and statistics part, and then we will practice a few questions based on it. Okay, so let's begin. Before that, there are a few things which I would like to share with you. So, since you know that Unacademy is the greatest learning platform in India, right? So, you can join this hub, you can join, be a part of this group and study, excel, and accelerate your preparation towards your goal for GATE and ES with Unacademy. To get your subscription, you can use my code ARO10, which will help you to get a 10% discount. Now, about me, my name is Arohi Malviya. I'm an M.Tech in Transportation from NIT Trichy, and I have 2.5 plus years of teaching experience for GATE and ES and mentored a lot of students for the same. I have mentored about 5,000 students for JEE Mains and Advance in Mathematics, and have myself qualified GATE and cracked PSC. You can use my code ARO10 to not only get your 10% discount on subscription, but also you can avail and get access to the free special classes on Unacademy, which are absolutely free using this code. So in the live class section, when you go and you try to watch a class, you can watch my classes there, you can watch other classes. You will be prompted for a code to unlock the classes. तो आप उनको इस कोड ARO10 को यूज करके उन सारी क्लासेस को unlock कर सकते हो, and you can watch them, you can watch and learn through those special classes. और अभी तो आपके लिए for preparation of your GATE and ES and your test series बहुत सारी स्पेशल क्लासेस चल रही है, टेस्ट ले रहे हैं आपके लिए लाइव. यू कैन जस्ट गो एंड वॉच दोज. So just download your Unacademy app, and in the free live class section you can get your classes, and also if you want to get your subscription you can get it there. The benefits of your subscription, it's very important to know in what you are investing. तो इन्वेस्ट तो आप बहुत अच्छी चीज में कर रहे हो. लाइव क्लासेस है, डेली लाइव टेस्ट है, अनलिमिटेड एक्सेस है, कहीं से भी बैठ के आप अपना एक्सेस कर सकते हो, अपना कोर्स स्टडी कर सकते हो. इवन वाइल यू आर गोइंग समवेयर, थोड़ा भी टाइम मिलता है, यू कैन स्टडी, यू कैन लर्न, यू कैन प्रैक्टिस. लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट, हमारे साथ 1-to-1 इंटरेक्शन होता है. आइकॉनिक में आपको ज़्यादा बेनिफिट्स रहता है बिकॉज यू हैव अ पर्सनलाइज असिस्टेंस और पर्सनलाइज कोच फ्रॉम योर मेंटर्स लाइक अस. So you will be given a particular study plan, and on based on which on your schedule you can align your preparation. तो आपके हिसाब से पूरा प्लान आपको दिया जाएगा, एंड पर्सनल असिस्टेंट के साथ पूरा स्टडी ट्रैक किया जाएगा आपका कि आप कैसे प्रिपेयर कर रहे हो. सो इट्स नॉट ओनली अ पर्सनलाइज असिस्टेंट, एक तरह से आपको पूरा मॉनिटर भी करा जाएगा दैट यू मेक प्रोग्रेस इन व्हाट यू आर डूइंग. सो दैट्स अ वेरी वेरी बेनिफिशियल पार्ट. और प्लस सब्सक्रिप्शन या प्लस के जो एडवांटेजेस हैं वो भी बहुत सारे हैं. इसमें पर्सनलाइज कोच नहीं है, बट आपके पास डेली लाइव क्लासेस रहती है, आप हमारे साथ चैट कर सकते हो. यू कैन आस्क योर डाउट्स व्हेनेवर यू वांट. यू हैव अ स्ट्रक्चर्ड कोर्स, अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल दीज कंटेंट्स, टेस्ट एंड क्विजेस. एंड इट्स नॉट लाइक कि आपको एक ही मेंटर मिलेगा, इतने सारे वहाँ पे कोर्सेज हैं. यू कैन एक्सेस एनी मेंटर, you can take the guidance of any mentor, and it's up to you.
एक एक मेंटर से पढ़ना है, मल्टीपल से पढ़ना है, आपके ऊपर है. यू कैन डिसाइड, यू कैन चूज अमंग्स द बेस्ट एंड द बेस्ट टॉप फैकल्टीज फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया आपको पढ़ा रहे हैं यहाँ पे. एंड ऐसा कभी हुआ नहीं है, दिस इज द फर्स्ट टाइम इट्स हैपनिंग. तो दिस इज लाइक अ समराइज्ड पार्ट कि आपको क्या क्या मिल रहा है इन दिस सब्सक्रिप्शन. सो बस जाओ, जाके अपना सब्सक्रिप्शन प्लान चूज करो. when you will use this code of mine ARO10, using this code your rates will be reduced. तो आपको 10% डिस्काउंट के बाद आप देखो काफी आपके रेट्स कम हो जाएंगे. एंड इफ यू सी योर पर डे कॉस्ट, ओके, सो दे आर वेरी लेस. मतलब आपके लिए कुछ 50-60 रुपीज पर डे पड़ता है. एंड दैट्स लाइक वेरी बेनिफिशियल फॉर योर प्लान. और जो सेकेंड और थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स है, दे शुड पे मेजर फोकस ऑन द प्रिपरेशन, बिकॉज यू नो थर्ड ईयर स्टूडेंट्स कैन गिव गेट this time, and since you can give gate this time, you have an ample amount of time कि आप अभी से प्रिपेयर करके फोर्थ ईयर में भी आपका अच्छे से अटेम्प्ट कर सको. सो इफ यू हैवंट स्टार्टेड, इट्स नॉट अ इशू. आप अभी भी, इवन द टाइम लेफ्ट, यू कैन यूटिलाइज द मैक्सिमम आउट ऑफ इट एंड प्लान फॉर योर नेक्स्ट ईयर प्रिपरेशन एज वेल. और सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स तो अभी से स्टार्ट कर देंगे. तो द अर्ली यू स्टार्ट द बेटर यू विल गेट. सिमिलरली आइकॉनिक में भी आपके साथ सेम 10% डिस्काउंट के बाद यू विल गेट दीज बेनिफिट्स ऑफ 10% डिस्काउंट. रेट्स आपके कम हो जाएंगे, यू कैन सी. And this is an important thing announcement. 29 December, that's today, आज हमारा combat battle 6 बजे से है. So if you want to participate, you can just register and use my code ARO10 to register in that combat battle. And after registering, आप उसमें participate करो. It's just like a आपका एक टेस्ट जैसा भी हो जाएगा फॉर योर गेट. एंड इफ यू आर अमंग्स द टॉप 50, तो आप देखो आपको यहाँ पे प्राइजेस भी मिल रहे हैं. तो आप जाओ, रजिस्टर करो. यू कैन यूज माई कोड एंड रजिस्टर फॉर द सेम इवेंट. And mechanical students, the batch has already started yesterday, and if you haven't enrolled in it, go get your enrollment. The top teachers, the top faculty, सारे educators आपको वहाँ पे mentor कर रहे हैं for your 2022 gate. So go get your enrollment in this batch. Special mechanical के लिए तो बहुत सही चीज है. Okay, so जो थी announcements that they are done, and now we can start with our continuous distribution. Before starting with continuous distribution, I want you to just have a quick recap जो हमने अभी तक देख लिया था, क्योंकि थोड़ा सा गैप हो गया है हमारे लेक्चर में 2 दिन का. So you just have a quick recap. So we started with your probability. What is in general probability? We studied the general terms, and then we switched to your statistics, and we have seen your discrete distribution. And last lecture में हमने एक general overall view देख लिया था. What is the difference between continuous and discrete, right? And we have seen discrete distribution completely. We have to practice some more examples on the same. Today we will focus on continuous, and then tomorrow we have a practice session for your probability, complete practice session which you can attend. Okay, and you can participate live with me. So we'll start with the continuous distribution. बेसिकली इन कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन, आपको पता है कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन में क्या प्रॉपर्टीज होती है. लास्ट क्लास आई टोल्ड यू, बट सिंस वी आर स्टडिंग इट अफ्रेश, तो अपन वापस से देखते हैं. बेसिकली कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन मतलब सारे कंटिन्यूस वैल्यूज होंगे. इट विल हैव वैल्यूज फॉर ऑल सेट ऑफ पॉइंट्स, राइट? सो इट हैज कंटिन्यूस वैल्यूज. एक तरह से आपका एक फंक्शन होगा, right? And if you graphically see, suppose some function is there, fx, this is a probability distribution उसका. तो आप किसी भी point in between, suppose it is defined between a to b, तो a से b के बीच में आप किसी भी point पे if you try to get the value of that probability at suppose any point c, then you will get a
point, or you will get a value because it is a continuous distribution. So for every point, okay, every point between A to B, you will have a probability value for a continuous distribution. ठीक है. अब continuous में भी क्या होता है कि दो तरह के continuous होते हैं. एक एक होता है कि आपका पूरा between the range A to B continuous function है, और दूसरा होता है you have a stepwise continuous function. Okay, in stepwise continuous function what happens? Stepwise continuous function, in that your function fx will be defined in several parts. Okay, so your function is defined in parts. Suppose like from x from 0 to 1, it has some function like 2x, right? And then from x between 2x by 3, and then from suppose from 1 to some other value, let us take, it has e to the power minus x. Okay, so this function, if you see, is a function which is stepwise continuous. This 2x by 3, it is a continuous function in its range 0 to 1. पर फिर दूसरा आपका क्या है, 1 के बाद आपका वैल्यू चेंज हो रही है फंक्शन की, इट इज e to the power minus x between 1 to infinity. So you see this function is changing its distribution. So इसलिए इसको हम बोलते हैं stepwise continuous. तो होता कुछ भी नहीं है. If in a stepwise continuous function, if you want to find the probability at certain point, तो आपको देखना पड़ेगा वो point कौन से range में है. Suppose you have to find the probability at 0.5, you have to use this 2x by 3, right? Because 0.5 किस में आता है, 0 से 1 के बीच में आ रहा है. Similarly, if you are finding the probability, suppose as some value 5, तो 5 किस range में आता है, it is between 1 to infinity, this particular set. So you will have to use e to the power minus x to find the probability at 5. So it's that easy, but there are some property which is applicable to all the continuous distribution, whether stepwise or the other functions which we are going to find out, study later on, exponential and normal distributions. So in that also these properties will be valid. So we will have a look on the general properties of your continuous distribution. General properties. So as I have already told you कि कोई भी अगर आपका distribution होता है probability distribution, then if you take the complete probability, ठीक है, पूरा मतलब जितने भी उसकी probability values है from minus infinity to infinity, that sum of all the probabilities should be equal to 1. ये आपका axiom है probability का, ये कभी भी violate नहीं हो सकता है. ठीक है, अगर वो एक valid probability distribution है, then it will follow your this criteria. Okay, so the integration from minus infinity to infinity for this function fx will be equal to 1 for your continuous distribution. Similarly, अब since you know कि हम जब किसी function को differentiate करते हैं, so we got this. Okay, so here I am writing fx, capital Fx will be what? Integration of small fx dx. So this capital Fx is actually your cumulative probability. ठीक है, this capital Fx will be denoting your cumulative probability. Okay, from suppose from minus infinity to some point x. ठीक है, तो अगर आपका कोई function defined है, some function is defined, so minus infinity to some point x, till some point x you want to find your continuous probability, cumulative probability. ठीक है, जैसे बोल देते हैं ना, फिर if x is between minus infinity to 5 ऐसा बोला, तो आप क्या करोगे, you have to find the cumulative probability. So if I am writing capital Fx, basically I am writing your cumulative probability. So for finding your cumulative probability in continuous distribution, क्या करना होगा आपको, you have to integrate, right, from minus infinity to that value x.
for your cumulative probability. That's the other property, capital Fx, that's the cumulative probability will be from minus infinity to x fx dx. ओके, तो ये दो जो बेसिक आपकी जनरल प्रॉपर्टी है कंटिन्यूअस की, ये हमेशा हर कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा. देयर विल बी नो सच डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल विच डू नॉट फॉलो दिस प्रॉपर्टी. ओके, सिमिलरली हर एक फंक्शन के लिए हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स देखा है. एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, इफ यू रिमेंबर, व्हाट डज इट इंडिकेट? इट इंडिकेट्स योर मीन, राइट? एवरेज इंडिकेट करता है आपका एक्सपेक्टेड वैल्यू. सो योर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स हियर, सिंस यू फाइंडिंग द एवरेज, ठीक है, हमने जो डिस्क्रीट में किया था, डिस्क्रीट में हमने क्या किया था, वी रोट इट एट समेशन एक्स एफ इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स. ठीक है, डिस्क्रीट के अंदर याद नहीं हो तो कैसे लिखा था हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स? ऐसे लिखा था ना, समेशन एक्स पी एक्स. ठीक है, तो वो डिस्क्रीट था, इसलिए आपने पर्टिकुलर वैल्यूज को मल्टीप्लाई करा था उसकी प्रोबेबिलिटी से और ऐड किया था. एग्जाम्पल भी हमने देखा था. But here, for finding your expected value, you will have to integrate, because आपका function is a continuous function. उसके हर एक point पे कोई definite value possible है. So you will have to integrate it between minus infinity to infinity. Expected value for the complete function निकालना है. तो minus infinity to infinity you will integrate x fx dx. So after your integration you will get your continuous average of your continuous distribution or expected value of x. Similarly, अगर आपको variance of x निकालना है, which is vx, we write it as variance of x, तो आपको याद होगा variance of x बोला था expected value of x square minus expected value of x whole square. ठीक है, बोला था ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा ही काम आना है. तो अब आप एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x तो आपने देख लिया, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर कैसे लिखोगे? सिमिलरली जैसे अपने एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x लिखा है, ठीक है, कुछ भी नया नहीं है. x की जगह एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी माइनस फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स एफ एक्स डी एक्स. ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा वेरिएंस ऑफ x. फाइन. सिमिलरली अगर आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी फॉर योर कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन टू पॉइंट्स, सपोज फ्रॉम A to B, ओके, सो इट इज ऑल्सो इक्वल टू प्रोबेबिलिटी लाइक दिस. इक्वल टू साइन भी होगा या नहीं भी होगा, इट डज नॉट मैटर. डिस्क्रीट में मैटर कर जाता था, ठीक है, डिस्क्रीट में अगर इक्वल टू साइन नहीं होता था तो आप उस पॉइंट को कंसिडर नहीं करते थे. बट हियर इट डज नॉट मैटर. It does not matter whether there is an equal to or not, because this is your continuous distribution, and when you integrate and put the limits, your point limit is not considered. तो इंटीग्रेशन के अंदर पॉइंट से फर्क नहीं पड़ता क्योंकि एरिया है ना. तो you can write it as your fx dx integrated from A to B. ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी कुछ भी नहीं है. जो आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कोई फंक्शन दिया होगा A से B के बीच में, सपोज आपको निकालना है इसका प्रोबेबिलिटी, तो बेसिकली आप ये एरिया निकाल रहे हो. ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व. सो यू आर जस्ट इंटीग्रेटिंग इट फ्रॉम A to B. दैट मीन्स यू आर फाइंडिंग आउट दिस एरिया. ओके, सो इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट टू स्टडी दिस कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन. बेसिकली आपको बस पता होना चाहिए कब आप एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल रहे हो, कब आप क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो, कब आप दो पॉइंट्स के बीच में प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो. तो दैट विल बी वेरी क्लियर. सिंपली जस्ट लाइक डिस्क्रीट में हमने किया था. बट दो तीन जो आपको इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बताई है वो बहुत यूज आने वाली है आपके कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन में भी. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट आउट ऑफ दोज इज दैट द कंप्लीट इंटीग्रेशन ऑफ योर फंक्शन from minus infinity to infinity will give you 1. ये आपके बहुत सारी चीजें सॉल्व करके देगा. ठीक है, कई बार आपको कांस्टेंट की वैल्यू नहीं पता होगी. सो all of that can be found out using this property of probability. Okay, so let's look at one question for an example of yours. वो भी गेट का ही क्वेश्चन है, so you will come to know about how we are approaching towards this.
Suppose you are given a probability density function. Probability density. Okay. तो आपका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन कोई रैंडम वेरिएबल x के लिए दे रखा है. इट इज गिवन एज fx इज इक्वल्स टू x by 4 minus x square for x between 0 to 2 and it is 0 for other values. ठीक है, तो ये आपका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है. आपको निकालना है फाइंड द मीन ऑफ द रैंडम वेरिएबल x. ओके, सो जस्ट ट्राई इट आउट. मीन का बोला है मतलब मीन मीन्स व्हाट, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x. ठीक है, अब आप देखो ये फंक्शन कैसा फंक्शन है आपका. इट इज डिफाइंड बिटवीन 0 to 2 एज x by 4 minus x square एंड बाकी जगह 0 है. ठीक है, तो आप इसको बोल सकते हो कि इट इज अ स्टेप वाइज कंटिन्यूस फंक्शन. ठीक है, भले ही 0 भी है तो ओवरऑल कंटिन्यूस ही. अब आप इस फंक्शन का निकालना है आपको मीन. दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x. टू फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x, व्हाट डू यू नीड टू डू? You will have to find that integration x fx from minus infinity to infinity. अभी बताया था ना expected value of x. So your expected value of x, which is also your mean. Okay. Yes, Kishle, that's right. Your answer is right. So that will be x fx from minus infinity to infinity. But when you see this function is 0 for all other values, while it is only having this function value from 0 to 2 x by 4 minus x square. ठीक है, तो बाकी जितना भी है that is from minus infinity to 0 and from 2 to infinity, this function is what, 0. तो वो 0 वाला पार्ट लिख के हमको कुछ फायदा भी नहीं है, इसलिए दिस इज जस्ट टू टेल यू नेक्स्ट टाइम वी आर नॉट इवन गोइंग टू कंसिडर इट. तो 0 वाला पार्ट तो आप ऐसे भी हटा सकते हो. अब आपको सिर्फ इसी पार्ट को इंटीग्रेट करना है. सो व्हेन यू आर गोइंग टू इंटीग्रेट दिस पार्ट, यू विल हैव x क्यूब का इंटीग्रेशन होगा. ओके, एंड यू हैव टू पुट द लिमिट. सॉरी, yeah, there's another x. Just a minute. Yeah, this is the function and you have to have x fx. So this x is there, so it will be x square, so it will be x cube by 3 and this will be x power 5 by, okay, yeah, right. So now you put the limit and solve it and it will come out somewhere 1.066. okay. So in a continuous distribution, there is nothing tough to solve. There is just one thing which you have to remember. What are you going to apply? And you have to integrate putting the correct limits. Okay? Just like the mistake I did right now, I did not multiply an x. Okay? X fx करना है. Even though I know, and if I do not multiply an x, so this is going to make a blunder. Your answer will come, and even you will not even come to know कि आपने गलती करी है, क्योंकि मीन आपका जो है 1 से ज्यादा आ सकता है, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है. तो इसीलिए आप थोड़ा सा ध्यान रखना है. ओके, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. So you are given a continuous random variable and has a probability density function as given below. Fx is equals to e power minus x, where x is between 0 to infinity. Then the probability of x greater than 1. Okay, probability of x greater than 1 you have to find. And since it is a gate question, आपका question है, I also have the options.
So just try to solve it. As I told you, if you want to find the probability from some point to some other point, you just have to put the limits correctly. ठीक है, integrate करके limits ठीक से डालनी है, and then you will get your correct answer. Continuous is very easy. So just try to solve it and let me know the answer. And if you have any problem, that too also you can tell me. So basically अगर आपको इसकी probability निकालनी है from कहाँ से, from x greater than 1, ठीक है. तो आप देखो for x greater than 1 means yes, Kishla, it's right. So what will be your answer? 1 by e, that means calculated 0.368. Okay, so you will see that this is this one lies between this range, and for greater than 1 means from 1 to infinity. तो बस आपको limits ठीक से रखना है. Okay, so you will write that if you want to find this probability, which is a cumulative probability for x greater than 1, that will be integration from 1 to infinity, and आपका function है e power minus x, limit आप रख दो and just integrate. ठीक है, तो e power minus x का minus e power minus x हो जाएगा. ठीक है, तो आपका आंसर आएगा 1 by e. So yes, Kishla has given the right answer. B आपका आंसर होगा 0.368. So देखो, वन लाइनर क्वेश्चन है, बहुत इजी. गेट का क्वेश्चन है और उस टाइम पे 2 मार्क का पूछा था. ऑल्दो नाउ आई डोंट थिंक दे विल आस्क सच इजी क्वेश्चन, बट द बेसिक थिंग इज the questions will move around this particular area only, because there is nothing much आपको जो दिया जा सके continuous probability में. ठीक है, ज्यादा से ज्यादा वो स्टेप वाइज कंटिन्यूस फंक्शन देंगे जिसमें 2-3 आपके फंक्शंस डिफाइंड होंगे. तो उस बस आपको लिमिट्स रखते टाइम ध्यान देना है. ठीक है, एंड वी विल सी मोर ऑफ such problems. Before that, let us see another your probability distribution, which is your exponential distribution. So in your exponential, there is nothing much to discuss. Exponential जैसा आपने ये क्वेश्चन देखा, एक exponential का ही क्वेश्चन है. ठीक है, तो उसमें कुछ भी नहीं है. बेसिकली वही सारी जो आपकी प्रॉपर्टीज हैं वही सारी यूज होने वाली है. यू जस्ट हैव टू इंटीग्रेट. अगर आपको पूरा प्रोबेबिलिटी इंटीग्रेट करोगे तो 1 के इक्वल आएगा. पूरा फंक्शन इंटीग्रेट करोगे माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी. And if you have any probability between a to b, you just can put the limits and integrate to find the cumulative. So basically उसी के अराउंड आपके क्वेश्चन आ सकते हैं. एक्सपोनेंशियल का ये एक एग्जांपल है, गेट में पूछा जा चुका है. ओके, let me share another question similar way. Okay, suppose this is the question given. You have to find the value of lambda such that the function is a valid function. The function given is valid probability distribution function. Probability density. So आपको जो एक फंक्शन दे रखा है which is fx is equals to lambda x minus 1 x minus 2 minus x for x between 1 to 2 and it is 0 for all other values. तो आपको lambda की वैल्यू बतानी है such that this function becomes a valid probability distribution function. ठीक है, तो valid probability distribution function, I hope आपको समझ आ रहा होगा. I have told you multiple times that if a function is a valid probability density function of probability distribution function, the overall probability, ठीक है, पूरा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक सारी probabilities आप ऐड करो तो sum should always be 1. Okay, and if you apply that concept here, then definitely you are going to get your correct answer. Please try to solve it.
try to solve it and tell me the answer for lambda. ठीक है? Meanwhile I'll explain. So as I told you कि अगर probability density function बनना है इसको, तो ये वाला रूल हर probability distribution को follow करना पड़ता है, that the complete probability is 1. So this function fx, which is lambda x minus 1 2 minus x, है ना, dx, आप इसको इंटीग्रेट करो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, बट व्हेन यू सी फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू 1 ये फंक्शन 0 है, तो दैट पार्ट इज 0, सो आई एम नॉट राइटिंग इट, ओके. बट फ्रॉम 1 to 2 इट हैज दिस वैल्यू, दिस फंक्शन लैम्डा, सो आई एम इंटीग्रेटिंग इट फ्रॉम 1 to 2, जितनी लिमिट है उतना ही आप उसको इंटीग्रेट कर सकते हो, एंड फिर वापस 2 से लेके इन्फिनिटी तक इट्स 0, ओके. Kishnet, try to check your answer. I think you have made some calculation mistake. Okay. So what you will do, just try to integrate it and equate it equal to 1. Okay. So we will integrate it. For integrating, सबसे पहले आप इसको अंदर का थोड़ा सा simplify करके लिख लो. So when you simplify, it will be minus x square plus 3x minus 2. Okay. And now you integrate it and then put the limits and equate it equal to 1. ठीक है, तो अब आप करो इसको इंटीग्रेट. Lambda is common, you will get here 3 by 2x square minus 2x 1 to 2. Solve it. So when you put the limits, क्या क्या आने वाला है आपके पास? You will get here 8 by 3 minus 1 by 3, so it will be minus 7 by 3, lambda into minus 7 by 3. Then you will have, when you put 2 it is 4, and when you put 1 it is 1, so it will be 3 into 9 by 2, and minus 2 into 2 minus 1, that's 1. So 2 is equals to 1. So solve it. So this I think you can just solve it, right? So lambda into your 1 by 6 is equals to 1. So you will get lambda is equals to 6. ओके. अब आप लिमिट्स पुट करके उसको सॉल्व करने में गड़बड़ मत करना, है ना. इफ यू आर डूइंग दिस कैलकुलेशन मिस्टेक, इट विल टर्न आउट डेंजरस फॉर यू. ठीक है, सब कुछ सही करके जो बेसिक कंसेप्ट है वो सही लगा के अगर आप कैलकुलेशन गड़बड़ करते हो तो ये तो फिर थोड़ा सा प्रैक्टिस ज्यादा करने की जरूरत है ना. तो ट्राई टू प्रैक्टिस इट मोर. ओके. Then okay, let's see another distribution. That's your very important distribution, and that's your normal distribution. Okay, so we'll see normal distribution. Is there any doubt up till here, or we can move forward? Okay. Yeah. Speedily, try to do it speedily, but just do not make mistakes while trying to calculate. ठीक है, तो थोड़ा सा 10 सेकेंड ज्यादा भी लगेगा तो कोई बात नहीं, मार्क्स नहीं जाना चाहिए. योर नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन, दैट्स योर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. इसको थोड़ा अच्छे से सुनना, क्योंकि इसके जब क्वेश्चन करते हैं तो देर आर अ लॉट ऑफ डाउट्स विच अराइजेस. सो इफ यू लिसन टू इट प्रॉपरली, probably you will not make any mistake and the doubts should not arise. तो थोड़ा सा ध्यान से इसको सुनना, ठीक है. I'll tell you the equation which defines your normal distribution. Your normal distribution is generally defined as fx is equals to 1 upon root over 2 pi sigma square e to the power minus x minus mu square upon 2 sigma square. ठीक है, for complete x is from minus infinity to infinity. ठीक है, तो ये आपका पूरा फंक्शन डिफाइंड है. इट इज बेसिकली अ कर्व, ठीक है, जो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक डिफाइंड है. इफ यू पुट हियर इंस्टेड ऑफ x, इफ यू पुट minus x, if you put here mu, okay, put mu, so this function will have a definite maximum value, and that's why this function, and it is also a symmetric function about mu. ठीक है, म्यू के अबाउट. तो अगर आप x माइनस म्यू है
और माइनस एक्स माइनस म्यू भी रख देते हो तो ये जो फंक्शन है सेम रहेगा, ठीक है. दैट मीन्स अबाउट एक्स इज इक्वल्स टू म्यू, दिस फंक्शन इज सिमेट्रिक. सो देयर आर सम प्रॉपर्टीज जो कि मैं अभी डिस्कस करूंगी. एंड दिस इज द जनरल इक्वेशन जिसमें आपका जो सिग्मा है दैट्स योर स्टैंडर्ड डेविएशन एंड सिग्मा स्क्वायर इज योर वेरिएंस ऑब्वियसली. म्यू इज योर मीन. तो अगर आपको कोई भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन दिया जाता है, सो इट इज रिटन एज दिस कर्व इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर. मतलब अगर ऐसे लिखा हुआ है इसका मतलब जो फर्स्ट टर्म नंबर है वो डिनोट करता है आपका मीन, दिस इज योर मीन, एंड द सेकंड डिनोट्स योर वेरिएंस. ओके, सो योर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज डिनोटेड लाइक दिस. नाउ इन दिस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो इसका कर्व होता है, suppose this is your normal distribution and this is your curve, ठीक है. ये आपका 0,0 origin. Now this curve, if you see, this curve is evenly distributed about your mean mu. Evenly distributed मतलब जितने आपके पॉइंट्स या जितना आपका प्रोबेबिलिटी टूवर्ड्स द राइट हैंड साइड होगा उतनी ही प्रोबेबिलिटी टूवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड होगा, ठीक है. या फिर जो आपके नंबर ऑफ द एवरेज नंबर and the left hand side will be equal to the average number on the right hand side. That is what it means. It is symmetric about the mean. ठीक है. अब इसको एक और नाम से भी बोलते हैं बेल शेप्ड कर्व. बेल शेप्ड कर्व. ओके, बिकॉज ऐसा लगता है उल्टा बेल रखा हुआ है. अभी तो ये थोड़ा सा फ्लैट बन गया है. इट कैन बी हैविंग अ हायर पीक एज वेल डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ योर प्रोबेबिलिटी एट मीन. ठीक है, तो वो डिपेंड करता है आपके डिस्ट्रीब्यूशन पे. सो दिस इज जनरल डिस्ट्रीब्यूशन. नाउ इन दिस एज आई टोल्ड यू the probability on the left hand side will be equal to the probability on the right hand side. That means दोनों तरफ आपकी इक्वल प्रोबेबिलिटीज आएंगी एंड यू नो दैट कंप्लीट प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1, है ना. तो लेफ्ट हैंड साइड की प्रोबेबिलिटी दैट इज लेफ्ट हैंड साइड ऑफ किसका, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ म्यू, your probability will be 0.5 and right hand side of your mean the probability will be 0.5. and अगर ये कर्व सिमेट्रिक है ना, जैसा कि आपको बोला कि इट इज सिमेट्रिक अबाउट मीन, दैट मीन्स कि सपोज आई एम टेकिंग सम पॉइंट हियर x equals to 1, sorry, yeah, here I am taking a point. I will not take x equals to 1, I'll take a point x is equals to, it is on the left hand side, so I am taking mu minus 1, and on the right hand side I am taking a point that is x is equals to mu plus 1. ओके, तो मतलब मैंने मीन के दोनों तरफ एक इक्वल पॉइंट ले लिया है. ऑन द लेफ्ट हैंड साइड -1 फ्रॉम द मीन एंड फ्रॉम ऑन द राइट +1. ठीक है, तो मीन से इक्विडिस्टेंट पॉइंट लिया है. In that case, your probability at both this point, ठीक है, बराबर होगी. Your probability at this point is P, then the probability at this point will also be P. And एरिया की बात चल रही, मतलब आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन है तो आप यहाँ पे कंटिन्यूस है तो आप एरिया की बात करते हो. सपोज यू आर फाइंडिंग फ्रॉम फॉर x लेस देन this value, x less than mu minus 1. Okay, so if you're finding x less than mu minus 1, that means from minus infinity to mu minus 1 you will integrate. So this will be the complete value after integration. And similarly if I tell for x greater than mu plus 1, तो उसका जो वैल्यू आएगा वो इस तरफ आएगा एंड बोथ विल बी इक्वल. क्योंकि जो आपका जो पॉइंट आपने लिया x1 विच इज म्यू माइनस 1 एंड x2 विच इज म्यू प्लस 1, दोनों कैसे पॉइंट है, मीन से इक्विडिस्टेंट है. तो और मीन के अबाउट ये कैसा है, सिमेट्रिक है. तो एरिया दोनों का कैसा आना चाहिए, बराबर आना चाहिए. सो व्हाट डिड आई से, योर प्रोबेबिलिटी एट x1 विच इज x1 x less than x1 will be equal to probability at x greater than x2. ठीक है, ये आपके x1 और x2 है.
तो आई होप आपको समझ आ रहा है, नहीं भी आ रहा है तो और अभी देखो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में आपको और बताती हूँ थोड़ा सा। अब क्या होता है, सिंस यू हैव दिस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विच इज हैविंग इट्स मीन एज म्यू एंड वेरिएंस एज सिग्मा स्क्वायर, ठीक है। बट व्हाट हैपेंस कि ऐसे तो कितने ही मीन हो सकते हैं और कितने ही वेरिएंस के लिए डिफरेंट डिफरेंट कर्व्स बन सकते हैं। So for a simpler approach, अब हर बार if you calculate the area and then you find out हर एक different curve के लिए, तो it is a hectic process. So this normal distribution has been simplified. There are charts available जिसमें आपको you have a standard normal curve based on which for particular values of x आपको आपका probability distribution मिलता है, ठीक है। तो जो आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो समझो, एंड देन देयर आर चार्ट्स दैट आल्सो आई टेल यू। नॉर्मल स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, इन अ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन your curve is like this. It is symmetric about origin, the y-axis, ठीक है। तो it is symmetric about your x is equals to 0. अब इसका मीन जो है म्यू is equals to 0 हो गया है, and the variance sigma square is here 1. This is your standard normal distribution. Okay, so standard normal is a normal distribution in which your mu is 0 and variance is 1. That denotes your standard normal distribution. अब इसमें फायदा क्या होता है, that you have your particular value of, suppose आपको किसी z value पे चाहिए, your z value, suppose here you have some value minus let's take 5. Okay, so if you want this -5, you have a chart available, तो आप उस चार्ट से directly you will get the value from -infinity to -5, this area you will get. Okay, तो हमारे लिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व यूज करना बहुत आसान हो जाता है, we do not even need to integrate again and again. But since we have a different curve, अब उसको standard normal curve में convert करना पड़ेगा, so we will have a transformation which we can use, ठीक है। तो बेसिकली आपके पास क्या था, you have some curve like this जिसका mean is mu and variance is sigma square, ठीक है। So this curve is normally distributed over mu and sigma square, and this standard normal curve is distributed over your 0 and 1, ठीक है, मतलब mean 0 variance 1. तो अब अगर आपको यहां से इस कर्व को इस जगह पे लेके जाना है, दैट इफ यू हैव टू बेसिकली एक तरह से आप समझ लो कैलिब्रेट कर रहे हो आप, यू आर जस्ट मेकिंग सम कैलिब्रेशन तो आप समझते ही होंगे, यू आर जस्ट शिफ्टिंग योर कर्व। तो इस कर्व को शिफ्ट करने के लिए, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को शिफ्ट करने के लिए यू हैव टू मेक अ सब्स्टिट्यूशन वेयर योर वैल्यू from your normal distribution with mu and sigma square will change to your standard normal distribution. Okay, so what is that substitution? That's important. Your substitution which you are going to do is z is equals to x minus mu by sigma. ये आपका substitution है which will shift your curve from mu comma sigma square normally distributed to 0 comma 1 normally distributed. अब इसमें देखो z is basically corresponding value of x from your normal curve. तो आपको सपोज यहाँ पे चाहिए था, ये आपका x है, तो इस x के corresponding what will be the value in this normal curve, ये निकाल रहे हो आप, ठीक है। तो that is z. So corresponding to this x, suppose your normal curve has a value here. So how will you get this z here? ये सब्स्टिट्यूशन से मिलेगा आपको, ठीक है। तो आपको इस पॉइंट पे चाहिए था, तो आपने क्या किया, यू पुट दिस x, म्यू मतलब इसका म्यू
mu of this curve, actual mu, and sigma of this curve. Sigma means the standard deviation of your normal distribution curve. ठीक है, तो आपको क्या मिल रहा है कि आप सब किसी एक पॉइंट x, सपोज कोई टेक सम वैल्यू ऑफ x, सपोज x इज इक्वल टू 2 पे निकालना था आपको, ठीक है, तो x इक्वल टू 2 जो आपके नॉर्मल कर्व पे था, उसको आप स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व में कितने वैल्यू से रिप्रेजेंट करते, ओके, वो आप पता कर रहे हो, दैट इज योर z. तो वो z आप कैसे निकालोगे, x माइनस म्यू बाय सिग्मा से. So you will reach at this z, and now you can use the normal distribution chart which is given and find the probability. ठीक है, this is the substitution, very important. इसको यूज करने में ही हम गलती कर देते हैं. So I will show you example where you should take care and where you can make mistake. We will see. Now the most important part of your normal distribution curve is the expected value of this normal distribution curve. Expected value क्या होती है, मीन होता है, राइट? तो मीन तो आपको पता ही है, दैट्स म्यू, एंड वेरिएंस दैट्स सिग्मा स्क्वायर. ठीक है, तो बेसिकली आपको डायरेक्ट मीन और वेरिएंस दिया जाता है, एंड यू हैव टू मेक दिस ट्रांसफॉर्मेशन टू फाइंड आउट एंड कंपेयर. ठीक है, अब स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को समझना बहुत आसान हो जाता है, बिकॉज व्हेन यू सी दिस इज सिमेट्रिक अबाउट योर y-axis. Towards the left of your y-axis your area is 0.5, and towards the right of your y-axis your area is 0.5. ठीक है, and now you can even compare two different probabilities based on the area. We will see how. Just note down the important properties. Properties note कर लो. ठीक है, इसमें जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन, मोड और मीडियन आपका बराबर होता है. ये तो आपको जब स्क्यूनेस बताया था वो भी बताया था, तब भी बताया था. सो इन दिस मीन, मोड एंड मीडियन इज इक्वल, दैट मीन्स दिस कर्व इज सिमेट्रिक. ठीक है, स्टैंडर्ड नॉर्मल की प्रॉपर्टीज बता रही हूँ, सिमेट्रिक और नॉर्मल की भी सेम ही है, बट इफ यू टॉक अबाउट स्टैंडर्ड नॉर्मल, इट इज सिमेट्रिक about y-axis, and in general your normal distribution is symmetric about mu. Okay, that's your mean, and इसमें भी mean, mode, median दोनों बराबर ही है, सब बराबर है. नॉर्मल की जनरल प्रॉपर्टी भी सेम ही है. in this your in both your total area under the curve is 1. ठीक है, और mu I'll write here. Total area under curve is कितना, 1. And if you want to have your transformation, you can use z is equals to x minus mu by sigma. ये चार चीज आप याद रखो. And yes, and the area distribution of normal curve, I'll tell. Area distribution. So in your area distribution, look, in any of your curve, in any of your standard or your normal distributed curve, as I told, it is symmetric about your mean. ठीक है, तो अगर आप एरिया लेते हो at one standard deviation, between one standard deviation, या number of points, number of data sets between one standard deviation, मतलब sigma. So between minus sigma to plus sigma, if you consider the number of data set or the total area of the complete data set, so it covers about 68% of your data values. ठीक है, मतलब 68% एरिया कवर करता है, या 68% ऑफ डेटा जो है अबाउट योर मीन बिटवीन माइनस सिग्मा टू प्लस सिग्मा, और आई कैन से बिटवीन 2 सिग्मा. ठीक है, ये 2 सिग्मा होगा ना, माइनस सिग्मा टू प्लस सिग्मा बिटवीन 2 सिग्मा. ठीक है, तो तीनों ही बातें एक ही है.
whether they say that the value between minus sigma to plus sigma, or the area between plus sigma to minus sigma to plus sigma, that's 68%, okay, or between 2 sigma, that also means 68%. Similarly, अगर आपके minus 2 sigma से लेके plus 2 sigma, that means if I look at the values between 4 sigma, the number of the data sets or the area percentage will be 95% in your normal distribution curve. And if you take this value between 3 sigma, minus 3 sigma to plus 3 sigma, that is between 6 sigma, ठीक है, 6 sigma के बीच में 99.7% आपके data values और the area is covered. So this is important. एक दो बार directly भी पूछा है. And this curve is basically used in a lot of things. जैसे हमारे जो गेट के भी मार्क्स होते हैं, जो डिफरेंट शिफ्ट्स में होता है गेट का पेपर, कुछ ब्रांचेस के लिए, सो दे व्हाट दे डू इज दे नॉर्मलाइज. तो हाउ डू दे नॉर्मलाइज यूजिंग दिस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ओनली. सो जो आपका मीन होता है फॉर ओवरऑल मार्क्स, दे टेक दैट मीन एंड दे फाइंड आउट द वेरिएंस, है ना, मीन और वेरिएंस तो निकाल ही सकते हैं, एंड देन this distribution is used. So if you have two different distribution, पहले शिफ्ट का मीन और वेरिएंस कुछ है, दूसरे शिफ्ट का मीन और वेरिएंस कुछ और है, both the curves can be now changed to your standard normal curve. अब स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व पे लाने के बाद दोनों का जो शिफ्ट होता है, शिफ्ट देखा जाता है. ओके, सो इसलिए नॉर्मलाइजेशन में कुछ के मार्क्स बढ़ जाते हैं if your shift has tougher questions and उसका एवरेज कम रहता है, तो उसमें जो मार्क्स होते हैं वो थोड़े से बढ़ जाते हैं कंपेयर टू द नेक्स्ट शिफ्ट. तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ही उसमें यूज किया जाता है. ओके, तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं आता, पर नॉर्मलाइजेशन इज अ प्रोसेस जो कि सिर्फ यहाँ नहीं, हर एग्जाम में बेसिकली जहाँ पे डिफरेंट शिफ्ट्स में आपके एग्जाम होते हैं, दिस इज व्हाट इज यूज्ड देयर. ओके, सो दिस इज अबाउट योर मीन. For any normal distribution curve, ये area distribution is valid, these properties are valid. Okay, so if you have any doubt, just ask me right now, I will clear it, or else we will move to a particular question, how we are using this normal distribution. Okay, so let's see a question, gate का ही है. एक तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन उसमें पूछा था. It was said that let x be a normal distributed random variable with mu equals to 1 and your sigma equals to 4. Sigma square was given as 416 and random variable. And it was asked that if you have to find the probability for x less than 0, probability for x less than 0, what will be the probability? Will it be 0? Will it be 0.5? Will it be 1? Or will it be greater than 0.5? ठीक है, तो ये आपका एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था on normal distribution. Let us see how you are going to approach towards it. तो आपका sigma square is given as 16, that's your variance is given as 16, your mean is given as 1. Okay, तो अभी आपका जो ये curve है, this is not in standard normal, so I can compare it very easily using standard normal, क्योंकि वहां पे मुझे समझ पड़ता है कि if it is less than 0 value आ रही है for z, जो ट्रांसफॉर्मेशन आप करने वाले हो which is x minus mu by sigma, ठीक है. तो अगर z आपका, if your z is what, z are these values right on this horizontal axis, तो अगर z आपका नेगेटिव आ रहा है, that means if it is towards the left side, that means your values, the area will be somewhere here 0.5 के पास होगा and towards the right. तो इसमें समझना आसान होता है. So I'll just make a transformation. So I want for x less than 0. लेस देन 0 का मतलब
z is less than 0, x की जगह आप 0 रखो, मीन की जगह आप 1 रखो, एंड सिग्मा की जगह, सिग्मा स्क्वायर 16 है तो सिग्मा विल बी 4, so you get z less than -1/4. ओके, सो अब आपका ये जो स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व है उसमें z लेस देन -1/4 आप देखोगे, दैट मीन्स समवेयर हियर कहीं पे होगा -1/4, राइट. सो यू विल सी z लेस देन -1/4 मतलब ये वाला एरिया -∞ से लेके -1/4 तक. यस यस किशले, योर आंसर इज करेक्ट. सो this will be the area. Now how are you going to compare it? जो टोटल एरिया था आपका -∞ to 0, दैट्स 0.5 है ना, और ये 0.5 से थोड़ा तो कम होगा, थोड़ा तो कम होगा ही, बिकॉज ये -1/4 है, इट इज नॉट एट 0, दैट मीन्स द एरिया विल बी लेस देन 0.5. ठीक है, 0.5 नहीं होगा बिकॉज इट इज लेस देन द वैल्यू इज -1/4, इट इज नॉट 0. ओके, एंड इट कैन नॉट बी 1 तो पूरे टोटल कर्व का होता है, एंड इट इज नॉट ऑल्सो 0 क्योंकि आपसे एक रेंज ऑफ वैल्यू पूछा था. या yes, it's less than. The option is this. Wait a second, I think I have not written the option properly. This option was for x greater than 0 and less than 0.5. This will be the option. ठीक है, so basically because I have not looked at the question again, तो ये वाला option था उसमें. Yeah, this was the option, right. So this will be your answer. मतलब greater than 0 होगा and less than 0.5 होगा. Okay, sorry for the mistake. So this was one example. Now let's look at another example. Yeah. So in this example, it was given that you have x and y as two random variables which follow your normal distribution with, for x is normally distributed with mu equals to 1 and sigma square as 16, or I can write sigma as 4, and y is distributed normally with mu equals to -1 and sigma आपको निकालना है, sigma is not given. ठीक है, and it is given that probability for x less than equals to -1 is equals to probability for y greater than equals to 2. ये कंडीशन आपको दी थी क्वेश्चन में, and this you have to find standard deviation for y, that means sigma for y. Okay, so there were options in this, but just try to solve it and tell me the correct answer कि sigma for y, what is the value for sigma for a distribution y. अब दोनों ही normally distributed है, so how are you going to approach towards this question. ठीक है, अब ऐसे तो अगर आप दोनों probabilities x और y को अलग अलग देखो तो आपके लिए मुश्किल होगा कंपेयर करना. So it will be easier for you to compare the same using your shifting of curve, या फिर आप उसको standard normal curve बोलो, उसमें आप अगर उसको shift कर दोगे तो आप आसानी से compare कर सकते हो. तो दोनों ही curves को you can shift to standard normal and then compare using the condition given, x -1, probability of x -1 and probability of y greater than 2. Yes Kishla, your answer is correct. No, just wait a second, you are getting sigma as 6. I think you have made some mistake in calculation, just check it once. Okay, so now look, आप क्या कर रहे हो, पहले x कर्व को भी, x वाले रैंडम वेरिएबल को भी शिफ्ट कर रहे हो स्टैंडर्ड नॉर्मल पे,
एंड y वाले को भी स्टैंडर्ड नॉर्मल पे शिफ्ट कर रहे हो एंड यू आर कंपेयरिंग विद द गिवन कंडीशन, राइट। तो x वाले को शिफ्ट करने के लिए नाउ यू कैन राइट z विल बी लेस देन इक्वल्स टू -1 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। सिग्मा कितना दे रखा है इसका 1 है। 4 इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी फॉर ये zx है फॉर y ठीक है, ये आपको दे रखा है। सिग्मा y आपको निकालना है। शिफ्टिंग समझ पड़ी, वही अपन ने यूज किया है, z इज इक्वल्स टू x माइनस म्यू बाय सिग्मा। ठीक है, तो x की जगह सिंस आपको यहाँ पे -1 के लिए दे रखा था, सो x वी हैव पुट हियर -1 and mu and sigma for x, mu and sigma for x were 1 and 4 respectively, and similarly y के लिए आपने पुट किया है for 2, ठीक है, greater than equals to 2. Now just solve it, you will get probability of z corresponding to x, ठीक है, z corresponding to x will be what you are getting here at -1 by, and here you will get probability for z corresponding to y, ठीक है। ये z y का मतलब ऐसा नहीं कि z y हो गया, corresponding to y I am writing, okay, greater than equals to 3y, yeah. Now if you see कि आपका जो स्टैंडर्ड नॉर्मल है दोनों स्टैंडर्ड नॉर्मल पे आ चुके हैं, ठीक है, तो बेसिकली z जो दोनों का है वो करस्पॉन्डिंगली सेम होना चाहिए। नाउ इट इज टेलिंग फॉर x लेस देन -1/2, x लेस देन -1/2 मतलब यहाँ पे कहीं पे दिस एरिया, एंड फॉर zy ग्रेटर देन इक्वल टू 3/σy। तो अब सिंस आप देखो लेस देन और आपको बताया था सिमेट्रिक होता है, तो ग्रेटर देन वाला जो एरिया होगा वो भी इसके बराबर होगा। एंड वाई वी आर शिफ्टिंग दिस और वाई वी आर चेंजिंग द साइन, बिकॉज यहाँ पे लेस देन साइन दे रखा है, यहाँ पे ग्रेटर देन साइन दे रखा है, सो यू विल हैव टू चेंज। कंपैरिजन हमेशा दो इक्वल चीजों के बीच में हो सकता है, मतलब जो भी आपके साइंस हैं कंपैरिजन के वो सेम होना चाहिए। अब आप लेस देन को ग्रेटर देन से कंपेयर नहीं कर सकते हो, दैट्स वाई we will have to make a shift or you will have to make a change. So आपको पता है for z less than -1/2 the probability and the probability for z greater than equal to 1/2 दोनों कैसी होंगी, बराबर होगी। So you will just put it here z greater than, now you can compare both of them क्योंकि अब दोनों ग्रेटर देन साइन में आ गए हैं। नाउ यू कैन कंपेयर दिस 1/2 एंड 3/σy क्योंकि अब दोनों सेम एक्सप्रेशन में आ गए हैं। ओके यस राइट, सिग्मा y is coming as 6. ओके I remembered it wrong. You are right Kishlay, nice. So I think that makes it clear how you're going to use your normal distribution for shifting. Okay, so इसमें बहुत ज्यादा टफ कुछ भी नहीं होता है, it's an easy process, it's an easy question. बस आपको पता होना चाहिए when you are shifting. Fine. Then there was some question on your in civil paper there was a question. It was given that your annual precipitation for a city is given and it is normally distributed with mean and deviation as normally distributed with mean and deviation is given 1000 mm and 200 mm respectively.
So you will have to find the probability that annual precipitation will be more than 1200 mm. Okay, so just try to find it out. So in this also you had some options like this, 100% and 50%. Okay. So you had this options. Annual precipitation दे रखा है, normally distributed, mean और deviation दे रखा है. I think it is a pretty easy question to understand and solve. Just tell me the answer. A, B, C, D में से. Mean आपको दे रखा है 100,000 and standard deviation is given as 200. ठीक है, तो अभी फिर से you cannot directly tell whether the area will be greater than less than. अगर आप बता सकते हो वैसे it's not a big deal, you can tell, but commenting based on standard normal is easier as compared to your normal curve. So what you will do, make a shift. You have to find Z will be greater than or equal to x minus mu, right? This is how you are going to do this. क्योंकि आपको चाहिए probability of x greater than 1200. Okay, only greater than चाहिए, equal to भी नहीं चाहिए, does not matter. So here this transformation will give you 200 by 200 z greater than 1. अब how can you tell that whether, yeah, okay Kishle, that's right. So your answer will be what? 100%? No Aman, z greater than 1 का मतलब है, ऐसे समझो, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बना के समझ लो. z greater than 1 मतलब this, somewhere here z is equals to 1. ठीक है, 0 के आगे ही होगा यहाँ पे, right? This will be your area. So you want this area z greater than 1. तो ये जो आपका एरिया है, it is definitely not 50%, right? And it is greater than it is less than 50%, क्योंकि 0 से होता infinity तक तो 50 होता, and it is less than 50%. और आपको definite answer यहाँ पे दे नहीं रखा है, what will be the area, so you will put this answer which is less than 50%. निकाल भी सकते हो कितना परसेंट होगा, बट आपसे ये नहीं पूछा जाएगा what is the percentage exactly. आपसे basically they want to know whether you are clear with the concept of normal distribution or not. Okay, so is that clear Aman what we are doing? आपने z greater than 1 देखा तो हमेशा आप normal distribution curve देखो, ठीक है. it will not take much time, एक छोटा सा कर्व ही तो है, ऐसे बना दो एंड लुक z greater than 1 का मतलब 1 से लेके infinity तक, तो the area will be less than 0.5 और 50%, ठीक है, 50% से कम होगा. So the question based on normal distribution are very easy, they are not at all tough, काफी easy होते हैं basically. तो just आपको क्या करना है, you just have to make this shift. अभी जो कल हमारा practice session है, in that also we are going to practice more questions on this, so you don't need to worry if it's not clear to you how we are doing this. We can have practice in that and you can ask me questions as well. अगर आपको कोई doubt है, you can ask me questions. Now exponential distribution, as I told you, there was one property of exponential which I would like to mention so that you do not forget it. Exponential distribution के अंदर बेसिकली जो आपका एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है e पावर माइनस x वाला डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है.
तो इन अ जनरल फॉर्म अगर उसको हम लिखें तो वी कैन राइट इट एज लैम्डा ई पावर माइनस लैम्डा एक्स, बिकॉज इफ आई राइट ई पावर माइनस एक्स दैट्स ऑल्सो अ डिस्ट्रीब्यूशन, बट उसमें हमने लैम्डा को एक स्पेसिफिक वैल्यू 1 दे दी है. हियर लैम्डा कैन टेक मल्टीपल वैल्यू. ठीक है, तो ये जनरल कर्व लिखा है हमने फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड फॉर एक्स लेस देन 0. ओके, सो ये पॉजिटिव साइड ऑफ योर नंबर लाइन पे ही डिफाइंड है. So your distribution, this probability distribution, if you want to find cumulative probability, कैसे लिखोगे? For x greater than equals to some value a, which can be written as integration from 0 to a, क्योंकि 0 greater than a लिखा है तो from a to infinity करेंगे. So you will write lambda e power minus lambda x. ठीक है, I hope you can do this. अगर मान लो आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, दिस कैपिटल एफ एक्स प्रोबेबिलिटी फ्रॉम एक्स इज बिटवीन एक्स लेस देन इक्वल्स टू ए, दैट मीन्स फ्रॉम 0 टू ए. उसके अंदर आप डायरेक्टली ये याद रख सकते हो, दिस यू कैन रिमेंबर 1 माइनस ई पावर माइनस लैम्डा एक्स, दिस विल बी योर प्रोबेबिलिटी लैम्डा ए. Okay, so if you have to find this probability between 0 to a, ठीक है, मतलब x less than a का मतलब 0 to a ही हो पाएगा, because for less than 0 everything is 0. This is what you can directly remember. Now in this expected value of x कैसे निकालते हैं? x fx integration minus infinity to infinity and you put the limits, so it will come out as 1 upon lambda. ठीक है, डायरेक्टली याद रखने का रिजल्ट है, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी. एंड सिमिलरली वेरिएंस ऑफ एक्स अगर आपको निकालना होता है तो आप कैसे निकालते हो? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का स्क्वायर, विच कैन बी फाउंड आउट एंड यू विल गेट इट एज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर. ठीक है, तो उसमें मीन आपका है 1 बाय लैम्डा एंड वेरिएंस इज 1 बाय लैम्डा स्क्वायर. ठीक है, तो अगर आपसे इधर पूछा जाए व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर अगर आपसे पूछी जाए तो आप कैसे बताओगे? विल यू फाइंड एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर लाइक एक्स स्क्वायर एफ एक्स dx करके इंटीग्रेट करोगे माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एंड वहां से भी फाइंड कर सकते हो. बट अदरवाइज फॉर एनी डिस्ट्रीब्यूशन इफ यू नो दिस वेरिएंस एंड यू नो दिस एक्सपेक्टेड वैल्यू, तो आपको पता है दैट वेरिएंस ऑफ एक्स आप लिखते हो, you write variance as expected value of x square minus expected value of x whole square. तो बेसिकली अगर आपको ये दो चीजें पता है तो आप तीसरी निकाल सकते हो ना. तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स होल स्क्वायर. तो यहाँ पे आप वेरिएंस ऑफ एक्स मतलब 1 बाय लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 बाय लैम्डा होल स्क्वायर, दैट मीन्स 1 बाय लैम्डा स्क्वायर, so it will come out as 2 by lambda. तो ये ज्यादा इजी है rather than calculating x square fx dx and then yes Kishla right. Okay, so ऐसा ही आपको जो पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन बताया था, in that पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन if you remember discrete में the mean was equals to variance है ना, उस पे एक क्वेश्चन था पॉइजन्स. ठीक है, डिस्क्रीट का है ये, यहाँ मत इंक्लूड कर लेना. इन डिस्क्रीट the last distribution which we studied poisons, there I told you कि आपका जो मीन होता है और जो आपका वेरिएंस होता है वो कैसे होते हैं दोनों, they are both equal and they are equal to lambda, है ना. and since they were both equal and if it is asked कि आपको expected value of x square निकालना है, that means you can find it by variance plus mu square. so what will be it equal to, वेरिएंस आपका लैम्डा है, म्यू आपका क्या है लैम्डा स्क्वायर, दैट मीन्स लैम्डा इनटू लैम्डा प्लस 1 like that. Okay, so there are some basic questions based on this which we are going to practice tomorrow, so just try to attend this practice session and if you have doubts, सारे probability का हम mix देखेंगे, हम उसमें continuous भी करेंगे, discrete भी करेंगे, सारे आपके गेट और ES के previous year question होंगे,
नथिंग आउट ऑफ इट, नथिंग अदर देन दैट. ठीक है, सब सारी प्रिपरेशन ओरिएंटेड टू योर गेट एंड ईएस. So you can attend that practice session and you can even ask doubts to me if you have any. And you can find me here at UNACADEMY. You can search my name with this section in the free life class section. Free life class section. You can search my name Arohi, Arohi, and when you will search, you will get my profile, and there also I have your sections. Yes, on special classes also I have taken one such practice on probability, and I'll take another such practice on probability in upcoming class. Okay, maybe tomorrow probably. And you can just follow me there on Academy पे, तो आपको वहाँ पे भी updates मिलते रहेंगे. If you press the notification button, you will get the updates there for the upcoming lecture, and you can attend those special classes for you and attend the practice session. वहाँ पे आप polls के through you can answer, so you will also come to know how much effectively your practice with time is going on. ठीक है, and this code can give access to those lecture if you have not got the access yet. आप वहाँ पे access भी ले सकते हो. You can also share this with your friends. Try to share it with as much people as you can, because you know आपके नीड के हिसाब से ही कंटेंट बनता है. सो the more you share, the more we come to know what type of content you need, and then we prepare based on it. Okay, so do not forget to share, like and subscribe. And for updates of upcoming lectures, there's a Telegram group. Okay, so in the Telegram group you will get the updates. And during the special classes, today I have this special class at 2. Okay, after I think what's the time, after half an hour we have the special class. In that I am taking a quick revision for probability, क्योंकि वहाँ पे we have already completed probability twice. So this is a revision वहाँ पे चल रहा है for those who have already studied probability and before GATE and ESE they want to revise. So today I have a revision session. Tomorrow we will have a practice session there, and tomorrow we will have a practice session here as well. So it's up to you whether you can attend it anywhere, both the sides, does not matter. ठीक है, दोनों तरफ हम different sets of question practice करेंगे. It's up to you which one you want to attend. You can attend both. Okay, that's the name is Engineering Mathematics Arohi Malviya. Okay, you can get it there. And लीड गेट चैनल का भी आपके पास टेलीग्राम ग्रुप है, वहां पे भी आपको अपडेट्स मिलते रहते हैं फॉर द अपकमिंग लेक्चर्स. यू कैन फॉलो देयर एज वेल. And if you have any doubt, you can when you follow there on special classes, I'll give you my mail so that you can mail me your doubts and I'll try to answer them as soon as possible. Okay, so that's all for today. We'll meet in the next class tomorrow for the practice session, and we'll see the practice session. Okay, thanks for coming, thanks for watching. Try to share it as much as possible.